Hello friends, in this problem of CodeChef, we will discuss the alternating subarray prefix whose difficulty level is 1408. So in this I will solve this in Python. So let's discuss it about its approach. Okay. So in it we have been given an n. Okay. We have to take n as input, which is basically the length of the array, and the array A, which is basically given as input, like for example 1 2 3 4. The array A can contain any kind of integer, like positive, negative, or whole negative. Okay, it can range up to n number of integers. Is that clear? Okay, so now discuss about the logic. In it we have been for example, take 1 2 3 4 5. It is a continuous array, okay, because all elements are running continuously. And 4 3 5 2, it is non-continuous, and it is continuous. So we have to just take continuous array and don't take the non-continuous array. Okay, so discuss about the continuous array. 1 2 3 4 5. So we have to just do what we have to so what we have to do, we have to just take the last element value as 1, and we have to multiply the last element with the second last element. So 5 multiply 4, if its value is less than 0. Okay, if its value is less than 0, then we will add the prefix to the plus 1. Okay, but 5 into 4 equals to 20, which is greater than 0, so its value will be 1. So 3 into 4 equals to 12, its value is 1. 2 into 3 is 6, its value is 1. All are greater than 0, it's also will be 1. So now take another example. 1 minus 1 3 minus 4 5. So 5 multiply minus 4 equals to minus 20, as minus 20 less than 0, so its value will be plus 1, means 2. So 3 multiply minus 4, its value is minus 12, so it's as it less than 0, so 2 plus 1, which is 3. So 3 multiply minus 1, its value is negative minus 3, so also it will be plus 1. 4, its value is also minus 1, n into 1 equals to minus 1, so its value will be 5. So our alternating subarray here is 5 4 3 2 1, and here 1 1 1 1 1. Is that clear? So now take another example. Minus 5 minus 1 minus 1 2 minus 2 minus 3. So basically minus 2 multiply minus 3 equals to 6, which is greater than 0. So always remember, we have to take last element as 1 and then start from second last element. Okay, so minus 2 multiply minus 3 equals to 6, which is greater than 0, so its value will be 1 only. So 2 into minus 2 equals to minus 4, less than 0. So 1 plus 1 equals to 2. So 2 into minus 1 equals to minus 2, which is less than 0. So again 2 plus 1 3. Now there is a twist. Minus 1 multiply minus 1 equals to 1, which is greater than 0. So again its value is positive, so it will be 1. Then minus 1 multiply minus 5 equals to 5, which is greater than 0. So again its value will be positive. Is that clear? So our alternating subarray prefix is 1 1 3 2 1 1. Okay. So now let's solve the alternating subarray prefix question in Python. Okay. So we will take t as input. T is equals to input, which takes the number of test cases as input. We will run it in for loop for I in t. Okay. For I in range t,
Now we will take n as input. N is an integer value, so we will take int input. Basically, n is number of, what is n? N is the number of integers in an array. Okay. Yeah. So now we have to take array a as input. A is equals to list. List defines the array, and then we have to join all the numbers in the array. So map int input dot split. It splits the elements of an array at a certain space. Okay, so now we will take subarray, which is basically 1 multiply n. Okay, so basically he it it is a list of array of length n in with all elements which are set to 1. Okay. Oops, there is a problem here. Sub array equals to 1 into n. Yes, now it's fine. So basically it initializes as a list sub array of length n with all elements and set to 1. Basically we take the last second element, so that's why we have to set the subarray of all elements to 1. Okay, so now we will run here a for loop for I in range. Basically we take the last second elements because the last element is always 1. Last element is always 1, though it may be a positive or negative. So basically it will run from 1 to -1. Okay, so this for loop will take the elements and it's in reverse order from the last second elements to the first element. Is that clear? Okay, so now we will check if a of I मल्टीप्लाई, मतलब लास्ट सेकेंड एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा, हाँ लास्ट थर्ड एलिमेंट मतलब लास्ट एलिमेंट लास्ट सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो अगर वो लेस देन ज़ीरो है, उससे है तो हमारा सब एरे इंक्रीमेंट होगा किससे? 1 से. इज दैट क्लियर? हमारा सब एरे 1 से इंक्रीमेंट होगा. सब एरे ऑफ आई इक्वल्स टू ये सब एरे ऑफ लास्ट सेकेंड एलिमेंट इंक्रीमेंट होगा 1 से. व्हाट्स द प्रॉब्लम गोइंग ऑन हियर? हाँ, तो हमारा सब एरे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है. पहले से समझ लेते हैं थोड़ा. एरे ऑफ लास्ट एलिमेंट मतलब अगर समझो तुमने लिया है मीन्स 2 -2 और -3. बेसिकली हम पहले -3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे. ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? बेसिकली 6 आएंगी जो कि ग्रेटर देन 0 है. ओके, सो हमारा लास्ट सेकेंड एलिमेंट
हमारा लास्ट सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स 1+1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके, लास्ट सेकेंड एलिमेंट 1+1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे जो कि इक्वल्स टू -4 है, और आप जानते हैं कि -4 वो लेस देन 0 है। इज दैट क्लियर? सो -4 लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होंगी। बेसिकली सॉरी, यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें लास्ट सेकेंड एलिमेंट इंक्रीमेंट नहीं करना है, जैसे कि वैसे ही लेना है 1। ओके, लास्ट सेकेंड एलिमेंट इज़ 1। यहाँ के अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें इंक्रीमेंट करना है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीमेंट नहीं करना है। ओके, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। सो बेसिकली लास्ट थर्ड एलिमेंट, सो बेसिकली और लास्ट थर्ड एलिमेंट इज 2। सो हमारा सब एरे होगा, क्या होगा हमारा सब एरे, एनीवन गेसेस? इट विल बी 2 1 1। लास्ट सेकेंड एलिमेंट जो 2 आया, लास्ट थर्ड एलिमेंट जो कि 2 आया, लास्ट सेकेंड एलिमेंट 1, और लास्ट एलिमेंट जो कि ऑलरेडी हमेशा 1 होता है। दो अगर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कुछ भी हो, तो हमेशा वो 1 ही होता है। ओके, सो अभी हमें एल्स यूज़ करना है। एल्स अगर मतलब एरे ऑफ, मतलब लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई लास्ट सेकेंड एलिमेंट अगर लेस देन 0 है तो हम सब एरे को इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो सब एरे है, हमारा सब एरे है इक्वल्स टू हमेशा 1 ही होगा। हमारा सब एरे जो है वो हमेशा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। इज दैट क्लियर? सो अभी हम प्रिंट कर देंगे हमारे सब एरे को। हम यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे, मतलब स्टार मार्क, जो कि ये स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, मतलब जो आंसर आएगा, जैसे कि समझो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सब एरे ए की वैल्यू यू क्या है 2 1 1, मीन्स 2 1 1 without star means pointer, it will print 2 1 1, which will give error. Okay, so now run the code. So now let's run the code. Basically it's giving a error। हमने यहाँ पे सब एरे लिया है, सब एरे, हाँ अब ठीक है। यस, हमारा आउटपुट बराबर जैसा है वैसे ही आ रहा है, आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट सेम है। तो नाउ इसे सबमिट करके देखते हैं। यस, सारे टेस्ट केसेस चल गए। सो मैं इस कोड को मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, और प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। मैं C++ और जावा का इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।